Hello everyone, welcome back. In this video, we will talk about TE, TM and TEM waves. In this unit, you will frequently hear the terms TE, TM and TEM waves. So we will see what exactly is TE, TM and TEM waves. So in rectangular waveguides can pass the different types of waves. It can pass TE or TM or TEM waves. Which waves will get passed through the rectangular waveguides or which modes will get blocked through this rectangular waveguide, उसका analysis हमको करना पड़ेगा. Before going for the analysis of this TE, TM and TEM waves, we will understand what are these TE, TM and TEM waves. So for that, we will consider this TE wave first. Now this TE stands for transverse electric waves, right? So TE stands for transverse electric waves. TM stands for transverse magnetic waves. And third, TEM stands for transverse electromagnetic waves. So we will go into the detail and see what are these waves. So in rectangular waveguide, we pass the electromagnetic waves. That means the electromagnetic waves are propagated through the rectangular waveguide by the reflections from the inner wall of the waveguides, and it will get reflected to and fro, and then it will be propagated in the forward direction. So as we are talking about the electromagnetic waves, this electromagnetic term consists of two terms. Yeah, it consists of two fields. One is, we will call it as an electric field, and second one is the magnetic field. Right? So in electromagnetic waves, we are having two fields, electric field and the magnetic field. Similarly, in previous chapters or the units, we have discussed about the different directions. We are having the three directions. One is nothing but here X direction, second is Y direction, and third is Z direction. I will call this as the X direction, this as a Y direction, and this as a Z direction. Also, we have seen that the electric field, right, can have the different field components. It can have the field component in X direction, जिसको EX बोलेंगे. It can have the field component in Y direction, and it can have the field component in Z directions. So that means electric field has three components, EX, EY and EZ. Similarly, magnetic field, right? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने? वेक्टर E से रिप्रेजेंट किया था, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे हम वेक्टर H से. तो वेक्टर H can also have the three components. Vector H has the components in X direction, जिसको बोलेंगे हम HX. It can have the component in Y direction, जिसको बोलेंगे हम HY, and vector H can have the component in Z direction, जिसको बोलेंगे हम HZ. So HX is the magnetic field component in X direction, HY is magnetic field component in Y direction, and HZ is magnetic field component in Z direction. That means इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए आपके तीन तीन डायरेक्शंस है और तीन तीन कंपोनेंट्स है, राइट? तो ये कंपोनेंट्स किसी भी डायरेक्शन में रह सकते हैं. सो एज द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, these components can present. Some of the components will be present and some of the components will not be present, right? So let us go and discuss about this TE waves. तो इसके लिए ये तीनों components आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, EX, EY, EZ and HX, HY and HZ, right? So concentrate on this. Now let us assume that the wave is propagating in Z direction. अगर आपका wave Z direction में अगर आपका propagate हो रहा है, right? इसका मतलब TE waves में और TM waves में और TEM waves में क्या रहेगा, ये हम डिसाइड करेंगे. अभी मैं assume करता हूं कि wave हमारे पास Z direction में जा रहा है. तो TE waves में देखेंगे हम, right? So I will go to the next slide where I have explained about the TE waves, so you can better understand. तो जैसे कि मैंने बताया कि TE waves is nothing but the transverse electric waves. Transverse electric, right? तो यहाँ पे टर्म आया हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रिक. That means if the wave is propagating in Z direction, the electric field component in Z direction will be equals to 0. यानी इसका मतलब EZ की वैल्यू TE waves के लिए क्या रहेगी हमारे पास 0.
as the wave is propagating in z direction, the electric field component in z direction will be 0. And if the electric field component in the z direction is 0, we can call that wave or mode as TE waves, and that mode that is called as the TE mode. Write this, right? So in TE waves, the electric field component in the direction of propagation of the wave is always 0. अभी हमने यहाँ पे z डायरेक्शन कंसीडर किया प्रोपोगेशन का, इसलिए Ez इक्वल्स टू 0 आएगा. If your wave is propagating in x direction, in that case TE waves के लिए Ex की वैल्यू 0 आएगी. But if the wave is propagating in y direction, in that case Ey की वैल्यू 0 आएगी for TE waves. लेकिन in most of the books the direction of propagation is assumed to be the z direction, so the electric field component in the direction of propagation of the wave is always 0 for transverse electric waves. Ez की वैल्यू 0 रहती है, इसका मतलब आपका Ex और Ey प्रेजेंट रह सकता है. That means the electric field component can remain present in a direction which is perpendicular to the direction of propagation. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन z डायरेक्शन था, इसका मतलब उस z डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन. इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड x या y डायरेक्शन में प्रेजेंट रह सकता है, बट इट कैन नॉट रिमेन प्रेजेंट इन z डायरेक्शन फॉर TE waves. और वही यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए. In TE waves, the electric field component in the direction of propagation of the wave is 0, while it exists in the direction perpendicular to the propagation of wave. Hence, it is called as the transverse electric waves. What is the meaning of transverse? Transverse means perpendicular. तो अगर z डायरेक्शन में मेरा वेव जा रहा है, तो इस z डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा. z डायरेक्शन को ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सा हमारे पास, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन. तो इस y डायरेक्शन या z डायरेक्शन में रह सकता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट प्रेजेंट है as compared to the direction of propagation of wave. So that's why it is called as the transverse electric waves. So if the direction of propagation is assumed to be z direction, जैसे हमने assume किया था, तो Ez की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी. तो ये आपको ध्यान में रखना है. This is important for TE waves. Ez is equals to 0 if the direction of propagation is assumed to be 0. And now this TE waves, it is also called as the transverse magnetic, not transverse, it is also called as the magnetic waves, transverse electric, right? यानी इलेक्ट्रिक को ट्रांसवर्स, यहाँ पे दो फील्ड है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है. और आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना रहता है, ये रहता है हमारे पास 90 डिग्रीज. दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जब मैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव्स के बारे में बात करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक वेव्स मिलेगा. सो दैट्स व्हाई यहां पे दिया हुआ है TE waves are also called as the magnetic waves. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर ये TE waves के बारे में अगर आपको समझा है, तो TM waves के बारे में समझना बहुत ही आसान है. जैसे TE waves है, वैसे TM waves आएगा. तो TM waves में क्या रहेगा, the magnetic field component in the direction of propagation will be 0. यानी z डायरेक्शन अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो z डायरेक्शन में hz की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, 0 आएगी. That means how you can have to read this, the magnetic field component in the direction of propagation, it is always 0, right? तो ये TM waves की प्रॉपर्टी है, जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है. तो you can see here for TM waves, it is also called as the transverse magnetic waves. So in TM waves, the magnetic field component in the direction of propagation of the wave is 0. ठीक है. अभी प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में यानी z डायरेक्शन में 0 है, इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में प्रेजेंट रह सकता है. इसका मतलब hx और hy आपका प्रेजेंट रहेगा. ओनली hz will be equals to 0, right? While it exists in the direction perpendicular to the propagation of wave, hence it is called as the transverse magnetic waves, right? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक. तो अभी हमने बोला था कि E और H, अभी H डायरेक्शन को ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर कौन सा फील्ड रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड. इसलिए इस वेव को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक वेव्स बोलेंगे, राइट? और इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज अज्यूम्ड टू बी 0 assumed to be the z direction, in that case hz is equals to 0. So for TE waves, Ez equals to 0. This is for TE. And for TM waves, hz is equals to 0. This is for TM wave.
लेकिन ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कौन सा है, जेड डायरेक्शन है, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव्स। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव्स द मैग्नेटिक, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक बोला, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब Hz की वैल्यू जीरो जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो Hz जीरो है, इसका मतलब Hx और Hy नहीं रहेगा, ऐसे नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट विल बी प्रेजेंट इन x एंड y डायरेक्शन, ध्यान में रखना है, ठीक है। और Hz इक्वल्स टू जीरो एंड दिस ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक वेव्स। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक का अपोजिट, यू कैन कंसीडर इलेक्ट्रिक वेव्स। नाउ सिमिलर फॉर द TEM वेव्स। अभी दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो हो जाएगा TEM वेव्स, दैट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट। T stands for transverse, EM stands for electromagnetic. So that's why it is transverse electromagnetic waves. So in transverse electromagnetic waves, TE और TM का mixing है। इसका मतलब if Z direction is the propagation of the wave, in that case EZ is equals to zero and HZ is equals to zero. इसका मतलब the electric field component and the magnetic field component in the direction of propagation is always zero. तो TEM वेव्स में EZ और HZ दोनों क्या रहेंगे, हमारे पास जीरो रहेंगे। इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रेजेंट इन x एंड y डायरेक्शन, x और y डायरेक्शन में प्रेजेंट रह सकता है, लेकिन देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द z डायरेक्शन। तो अगर z डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट नहीं है तो योर वेव विल नॉट प्रोपोगेट, ध्यान रखना, आपका वेव प्रोपोगेट नहीं होगा। So in TEM waves, the electric and the magnetic field component in the direction of propagation of wave is zero, while they exist in the direction perpendicular to the propagation of wave, जो already मैंने explain किया हुआ है। Thus, this is called as the transverse electromagnetic waves, right? So if the direction of propagation is assumed to be the z direction, then TEM waves के लिए EZ और HZ की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये नोट डाउन करके रखना है, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं। देखिए TE वेव्स के लिए किसकी वैल्यू जीरो रहेगी, EZ की वैल्यू जीरो रहेगी। TEM वेव्स के लिए, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के लिए HZ की वैल्यू जीरो रहेगी, और TEM वेव्स के लिए EZ और HZ दोनों क्या रहेगा, हमारे पास जीरो रहेगा। सो दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर फॉर द डिफरेंट मोड्स, राइट, क्योंकि ये हमको आगे काम में आने वाला है। सो होप आप लोगों को TE, TM and TEM waves का कंसेप्ट समझ में आया होगा। So that's all for this video. Thank you very much.